Is my screen visible? Yes, ma'am. Okay. So in last lecture we have finished with unit 2. सिर्फ उसका जो क्वेश्चन का डिस्कशन था वो बाकी है, तो वो कभी हम ऐसे थोड़ा टाइम बचेगा तो तब देख लेंगे. So today we'll start with the third unit, that is data pre-processing. जो हमारा फर्स्ट यूनिट था उसमें हमने देखा था कि डेटा प्रोसेसिंग एक वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज है डेटा माइनिंग का, राइट? याद है आपको? देखा है आपने? रिवाइज किया फिर से यूनिट फर्स्ट? Yes, ma'am. हाँ, तो उसमें हमने देखा था कि डेटा प्री प्रोसेसिंग इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट स्टेप ऑफ डेटा माइनिंग. तो ये डेटा प्रोसेसिंग ऐसे कहने के लिए तो सिर्फ एक स्टेप है, लेकिन इट इज़ वेरी वास्ट, इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस एंड इट इज़ वेरी क्रूशियल बिकॉज जो भी आपको डेटा माइनिंग का पर्पस क्या है कि कुछ नॉलेजेबल इंसाइट्स डेटा से एक्सट्रैक्ट करना. तो जो भी आपको वो नॉलेज मिलने वाला है, जो भी आपको यूजफुल इंफॉर्मेशन मिलने वाला है फ्रॉम योर डेटा, दैट ऑल डिपेंड ऑन कि आपका डेटा कैसा है, राइट? बिकॉज रियल वर्ल्ड डेटाबेस में जो डेटा होता है वो बहुत लार्ज साइज का होता है, अलग अलग टाइप का होता है, अलग अलग सोर्सेज से कलेक्ट किया हुआ होता है, राइट? तो ये सारा जो डेटा हम कलेक्ट करते हैं उन पे प्री प्रोसेसिंग करके फिर उन पे कुछ डेटा माइनिंग टेक्निक लगाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बिकॉज अगर हमने डेटा प्री प्रोसेस अच्छे से नहीं किया तो जो भी आपको इंसाइट्स मिलेंगे वो भी गलत होंगे. So in this third unit we will see how data pre-processing is performed on the data. Okay, what are different processes in data pre-processing? Multiple, again we have some steps, you can say. जैसे data pre-processing is one part of or one step of data mining. Inside data pre-processing, again we have multiple sub steps or multiple techniques are there using which we can pre-process our data. Okay, so that all techniques we are going to see here in this particular unit. So these are the topics that we'll cover. First is data pre-processing overview, then data cleaning, data integration, then data reduction, data transformation and discretization. Okay, these all are broad topics, but inside this every topic we have so many methods, we have various techniques that are involved, so we will see them one by one. Okay, so let us start with this unit. So here in overview we are going to see, we are going to divide this in two perspective. First is data quality, or why do we need a good quality data, or what is the importance of pre-processing the data, and then next aspect we'll see, that is major tasks that are involved in data pre-processing. ठीक है? Now first thing, data quality and why to pre-process the data. So this data quality is very essential for effective data analysis and decision making. जैसे मैंने अभी आपको explain किया कि अगर आपको यूजफुल डेटा चाहिए, अगर आपको आपके डेटा माइनिंग के बाद अच्छे इंसाइट्स चाहिए, तो उसके लिए डेटा क्वालिटी इज वेरी मच इम्पोर्टेंट. And when we say data quality, or we should have good quality data, so how we are going to measure that quality? Getting it? कि जब हम कहते हैं कि हमें गुड क्वालिटी का डेटा चाहिए या अच्छा डेटा चाहिए ताकि हमें अच्छे इंसाइट्स मिल सके, तो हम वो डेटा क्वालिटी कैसे मेजर करेंगे? So that data quality is measured or is determined by factors using accuracy, completeness, consistency, timeliness, believability and interpretability. These are the parameters on the basis of which we can judge, we can determine the quality of the data.
So if your data is accurate, that means it is a good quality data. गेटिंग इट मीन्स अगर आपके पास कुछ डेटा है जिसमें एक कॉलम है एज, ठीक है, तो एज में लेट से 12 है, 50 है, 70 है, देन इट इज ओके. बट अगर आपके एज में 150 है, so this 150 age is not possible, right? So this data is not correct, it is not accurate. Understood? Yes, So ma'am. so if such values are present in your data, it will degrade quality of your data. Okay, और next we can say completeness. सेम आपके पास कॉलम है, ओके, और लेट्स से कुछ स्टूडेंट्स का डेटा है आपके पास, ओके, लेट्स से 10 स्टूडेंट्स का डेटा है आपके पास, और इसमें एज में कुछ वैल्यूज मिसिंग है, मतलब ये है, इसके बाद आपके पास 70 है, लेकिन इन बिटवीन यहाँ पे भी कुछ वैल्यू है जो कि मिसिंग है, मीन्स योर डेटा इज नॉट कंप्लीट, right? So like there are some parameters, these parameters on the basis of which we can determine the quality of the data. Okay, so here accuracy. So you if your data contain errors, some unusual values or discrepancies, we can say data is not accurate, or it will damage accuracy of your data, it will degrade quality, and uh, then it will degrade quality of your data. If your data is not accurate, then data quality is not good, right? Then another thing is completeness. Okay, so if there are some missing attribute values, or entire attribute of your interest is missing in your data, then we say that data is not complete, or it is damaging completeness of your data. Sometimes whenever we are entering some data, some human error occurs there, and some values in the data is are not getting entered, and that is why this missing attributes, or it data not become complete. Okay, and that is why it damages to the quality of your data or completeness of your data. Okay, so such data you need to pre-process to make it complete. Got it? Yes, ma'am. Okay. Then next is consistency. Consistency means discrepancies in data code or formats. Let's say in some data you are storing, what example we can take? Let's say you are storing subject codes. Okay, so you have some subject data, subject table, in which you are storing subject codes, then subject name. Okay, now your subject codes are formed like, let's say, BCA 101, BCA 102, BCA 103, like that you have your subject codes. Okay, now in this data, let's say we have stored these subject codes 101, let's say it is maths, BCA 102, it is 102, let's say this is C programming, and next subject you are storing only with number 103 and with some subject like networking. So here you can see the subject codes are not consistent, they are not in same format. So this type of errors also cause inconsistency in your data, and that ultimately damages quality of your data. Okay, because they are not in consistent format, they are not in uniform format. Okay, this is just for example. Got it? This is called as consistency. Now these three are the prime or major parameters that maintains quality of your data, like your data must be accurate, your data must be complete, and your data must be
consistent. Okay, but along with that, two more issues are there, that is believability and interpretability. Okay, so believability means trustworthiness of the data. So what is trustworthiness? Let's say in past some error had already caused in the data, right? So that past error can cause users to distrust the data. Okay, so sometimes users are using some data and they found that there are many errors in the data, right? So in future, even if you correct that data, still the trustworthiness is not there. The trust among users for your data will be reduced, and this will cause the damage in the data quality because users are not believing on your data. Okay, so trustworthiness of data is also important. And one more thing is interpretability. Okay, so whenever any data analyst see the data should be easy to understand. Okay, so the feature column name should be proper, the data represented should be proper, because if data is not properly understood by data analyst, he will not able to make analysis of that data. Okay, he will not able to apply various techniques on that data. So your data must be interpretable. Okay, so these first three are prominent issues, or the first three are prominent parameters to determine quality of your data. But along with that, your data must be trustworthy and it must be interpretable. It must be easily readable. It must be easy to understand. Okay, so use of some unfamiliar codes can make data difficult to interpret. So you should use some familiar codes to easily understand the data. So ease of understanding is very important along with trustworthiness. Okay, so these are some of the factors which can determine quality of your data. Got it? Yes, ma'am. And to ensure these factors, like to ensure accuracy, completeness, consistency in your data, you have to perform data pre-processing. Means there are cases like your data cannot be always accurate, right? But when your data is not 100% accurate, it is responsibility of data analyst, or uh, before applying any data mining technique, it is our responsibility that we should convert that inaccuracies into accuracy, right? And for that we need various data pre-processing techniques. Okay, so these are the factors, and to ensure these factors we have to perform the data pre-processing on the data. Okay, now next we'll see, again and again we are using the word data pre-processing, and as I already told you, this data pre-processing, this one word contain a complex processing task. Okay, multiple steps are there. So major tasks involved in data pre-processing are listed here. Okay, so as I told you, data pre-processing is crucial in preparing data for effective data mining and analysis, and it involves multiple steps. Okay, some of the steps are listed here, and again you will see in each one of these steps, again we have subdivided these into multiple techniques. Okay, so like we have multiple techniques for data cleaning, we have multiple techniques for data integration, data reduction, data transformation. Okay, but these are the major tasks involved in data pre-processing. Okay, data cleaning, here in data cleaning, as its name suggests, we are going to clean the data. Clean the data means we are going to feel if there are some missing values,
we are going to smooth if there we are going to use some smoothing techniques if there are any noise in the data. Okay, if outliers are there in your data, we are going to remove those outliers. Okay, if inconsistencies are present, we'll remove those inconsistencies. These all tasks are involved in data cleaning. गॉट इट? क्या करते हैं हम डेटा क्लीनिंग में? मैं यहाँ पे लिखती हूँ, अगर आपको नोट्स लिखने हैं तो। डेटा क्लीनिंग में हम क्या करते हैं, अगर कुछ मिसिंग वैल्यूज है तो वो मिसिंग वैल्यूज फिल करते हैं। देन वी यूज वेरियस स्मूथिंग टेक्निक्स फॉर नॉइजी डेटा। ओके, तो ये नॉइज क्या होता है डेटा का, वो हम आगे डिटेल में देखेंगे। सो दीज आर ब्रॉड steps included under data cleaning. So we can fill the missing values, we can apply smoothing techniques for noisy data, we can, if some outliers are present, we have to remove those outliers. Then if some inconsistencies are present in the data, we need to resolve those inconsistencies. आई होप आउटलायर का कॉन्सेप्ट आपको पता है। Yes, ma'am. Okay. Now next major task involved in data pre-processing is data integration. So आपको क्या समझ में आता है integration word से? Yes, can anyone tell what is integration? Yes, किसी को कुछ आइडिया? इंटीग्रेशन वर्ड हम बहुत बार यूज करते हैं कंप्यूटर्स में, सॉफ्टवेयर्स में, ऑन मल्टीपल प्लेसेस वी यूज। इन जनरल ऐसे भी हम इंटीग्रेशन वर्ड यूज करते हैं। तो इंटीग्रेशन, डेटा इंटीग्रेशन का मतलब क्या हो सकता है? मैम शायद सिमिलर डेटा को इंटीग्रेट करना। क्या करना? सिमिलर डेटा को इंटीग्रेट करना। ओके, गुड ट्राई। एनीवन एल्स? सी आई जस्ट एक्सप्लेन यू कि जो भी डेटा हम कलेक्ट करने वाले हैं, दैट डेटा इज फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेस, राइट? तो ये जो मल्टीपल सोर्सेस से हम डेटा कलेक्ट करेंगे, इनको हमें क्या करना है? मर्ज करना है या कंबाइन करना है। ओके, दिस इज कॉल्ड एज डेटा इंटीग्रेशन. So integrating, data integration means integrating the data from multiple resources. Like one best example is data warehouse. डेटा वेयरहाउस में क्या होता है? डेटा वेयरहाउस में डेटा स्टोर होता है विच इज कलेक्टेड फ्रॉम वेरियस सोर्सेस. ओके, so this data integration is one of the major tasks in data pre-processing. Then next is data reduction. So here we reduce the size of data. We reduce size of data. ओके, तो अभी ये साइज कैसे रिड्यूस करना है? लेट से आप कोई स्टूडेंट्स के डेटा पे वर्क कर रहे हो, ठीक है? तो आपके डेटा सेट में आपने लिया है कॉलम स्टूडेंट आईडी. ओके, देन यू हैव स्टूडेंट नेम एक्सेट्रा वॉट एवर, देन स्टूडेंट ग्रेड्स होंगे, जो भी स्टूडेंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो आपने स्टोर की है, ठीक है? तो अगर आपको डेटा माइनिंग के कुछ टेक्निक अप्लाई करने हैं तो ऑब्वियसली स्टूडेंट आईडी हमने डेटाबेस में सिर्फ स्टूडेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए स्टोर करके रखा था, राइट? डेटा माइनिंग में आपको स्टूडेंट आईडी का कुछ यूज नहीं होगा. हम क्या करेंगे? स्टूडेंट आईडी रिमूव कर देंगे. ओके, सो अननेसेसरी जो डेटा है वो हम रिमूव कर देंगे, ठीक है? जैसे आप कुछ डेटा पे वर्क कर रहे हो कि बेस्ड ऑन ग्रेड्स आप प्रेडिक्ट कर रहे हो कि प्लेसमेंट होगा या नहीं होगा, ठीक है? स्टूडेंट के
ग्रेड के बेसिस पे आपको प्रेडिक्ट करना है कि प्लेसमेंट होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो सच एनालिसिस के लिए आपको क्या चाहिए, सिर्फ स्टूडेंट के ग्रेड्स चाहिए, राइट। ये बाकी की जो स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन होगी, जैसे आईडी होगा, फोन नंबर होगा, सो फोन नंबर डज नॉट अफेक्ट द प्लेसमेंट, राइट। फोन नंबर से प्लेसमेंट पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो फोन नंबर फॉर सच टास्क इज अननेसेसरी, right? So in that case we'll remove that column. This is how we'll keep only the important columns, important features in the data. All the other features that are not required, we'll remove that data. Okay, this is called as data reduction, in which we reduce the size of data. Okay, and what is use of reducing the size? Yes, साइज रिड्यूस करने से क्या होगा, प्रोसेसिंग कम हो जाएगा, बिकॉज अगर और आप मैम अननेसेसरी डेटा रखोगे तो वो प्रोसेस होगा। यस, यस मैम, स्टोरेज ज्यादा नहीं। स्टोरेज, राइट, स्टोरेज भी आपको हम्म, ज्यादा लगेगा अगर आप अननेसेसरी डेटा रखते हो, प्रोसेसिंग भी ज्यादा लगेगा, राइट। और समटाइम्स अगर डेटा माइनिंग में आप अननेसेसरी डेटा वैसा ही रखते हो या रिड्यूस नहीं करते हो, तो ऐसे भी चांसेस होते हैं कि जो आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी वो रॉन्ग होगी, ठीक है, बिकॉज उसने स्टूडेंट आईडी को भी कुछ इम्पोर्टेंट कंसिडर कर लिया और एज अ डेटा कंसिडर कर लिया, ऑन द बेसिस ऑफ दैट आल्सो इट इज प्रिडिक्टिंग द प्लेसमेंट, तो वो जो आपको प्रिडिक्शन मिलेगा वो रॉन्ग होगा। सो इट इज वेरी नेसेसरी टू रिड्यूस द डेटा, so that is one of the major tasks. And then last here is data transformation. Okay, so data transformation means whatever data you have, you have to convert that data in suitable format. Suitable format for what? Suitable format for data mining algorithms. Okay, so हर एक data mining algorithm की कुछ requirement होंगी कि इस टाइप में डेटा चाहिए, इस फॉर्मेट में डेटा चाहिए, तो अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू ट्रांसफॉर्म योर डेटा, then only you can apply data mining algorithm on that data. Okay, so data transformation means transforming data into suitable format for data mining algorithm. Okay, so ये ट्रांसफॉर्मेशन के भी वेरियस टेक्निक्स है, जैसे नॉर्मलाइजेशन है। इसमें क्या करते हैं हम, जितने भी हमारे डेटा में वैल्यूज है उनको एक रेंज में, लेट से 0 to 1 के रेंज में ट्रांसफॉर्म करते हैं, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द टेक्निक और वन ऑफ द एग्जांपल यू कैन से, बिकॉज डेटा माइनिंग एल्गोरिथम, बिकॉज इट इज द नीड ऑफ डेटा माइनिंग एल्गोरिथम कि उसको डेटा कैसा चाहिए, नॉर्मलाइज्ड। तो नॉर्मलाइज डेटा चाहिए तो हम क्या करेंगे, हमारा जो भी डेटा है उसको नॉर्मलाइज करेंगे, मतलब 0 to 1 के रेंज में कन्वर्ट करेंगे और फिर वो डेटा हम अल्गोरिथम को दे सकते हैं, ठीक है। एनी डाउट? नो मैम। इज इट क्लियर एवरीथिंग? यस मैम। ओके, सो लेट अस मूव फर्दर। इस डायग्राम से आपको और भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। दिस इज जस्ट फॉर डेमोन्स्ट्रेशन पर्पज। तो अभी जो हमने 4 मेजर टास्क देखे थे डेटा प्री प्रोसेसिंग के, वो सिर्फ ये डायग्रामेटिकली यहाँ पे रिप्रेजेंट किए गए हैं। तो डेटा क्लीनिंग में हम करते हैं मिसिंग वैल्यू रिप्लेस करते हैं, या फिर जो कुछ नॉइज है वो रिमूव करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, आफ्टर क्लीन दिस इज द डेटा एंड व्हेन यू अप्लाई डेटा क्लीनिंग ऑन इट। ओके, data integration means data collected from various sources, you are integrating data into one place. This is called as data integration. Here you have values in different scale and you are transforming that data. Okay, so you are transforming all the values into some range. This is called as data transformation, and this is the representative diagram for reduction. तो पहले आपका डेटा ऐसा था and we have removed unnecessary data from this
So we have reduced the data. Okay, this is called as data reduction. I hope now it is all clear. Okay, let's move further. तो आज हम ये सबसे पहला स्टेप देखेंगे डेटा प्री प्रोसेसिंग का, दैट इज डेटा क्लीनिंग. जस्ट अ सेकेंड. Okay. So whenever we collect data, that real world data can be incomplete, noisy, inconsistent, that we have seen. So the data cleaning or data cleansing routines attempt to fill the missing values, smooth out noise, identify outliers, and correct inconsistencies in the data. Okay, so these four can be the issues whenever you collect the data. The data can have missing value, the data can have noise, data may have outlier, and data may have inconsistency. Okay, so these four issues can be handled in different ways. Okay, so we will see them one by one, that is how to handle missing value. Then we'll see in data cleaning we are going to see this, how to handle missing values, then various data smoothing techniques, and then we'll see what different approaches are there for data cleaning as a complete process. Okay, so in data cleaning first we'll see how to handle missing values. ये क्लियर है आपको डेटा क्लीनिंग क्या है? ओके, सबसे पहले डेटा माइनिंग. डेटा माइनिंग का एक प्रोसेस है डेटा, एक सब प्रोसेस है डेटा प्री प्रोसेसिंग. ओके, तो कंफ्यूज मत होना, आपको ये फ्लो याद रखना है. डेटा माइनिंग का एक प्रोसेस है डेटा प्री प्रोसेसिंग. डेटा प्री प्रोसेसिंग का एक सब प्रोसेस है डेटा क्लीनिंग. और ये डेटा क्लीनिंग के लिए हमें वेरियस मेथडोलॉजीज है, जैसे handling missing values, then various data smoothing techniques. Okay, so ये approaches हम data cleaning के अंदर देखेंगे. क्लियर है फ्लो? यस मैम. ओके, तो सबसे पहला टेक्निक है हमारा हाउ टू हैंडल मिसिंग वैल्यूज. ओके, तो ये मिसिंग वैल्यूज हैंडल करने के लिए भी हमारे पास मल्टीपल मेथड्स हैं. ओके, so first of all, what is missing value? If you have some data and when there is no data in some cells or in particular attribute in the data set, we call it as a missing value. Okay, missing value आपको समझ में आ गया कि missing value क्या होता है? यस मैम. यूजर द्वारा अगर किसी भूल हाँ, से या कोई भी डाटा फिल रीजन नहीं से किया. अगर डेटा में कुछ रिकॉर्ड एंटर नहीं हुए हैं तो वहां पे ब्लैंक रहेगा, राइट? दैट इज कॉल्ड एज मिसिंग वैल्यू. तो अगर कुछ सेल्स में एक्सेल आपने यूज किया है? यस मैम. हाँ, तो अगर एक्सेल में आपके पास कुछ डेटा है स्टूडेंट्स का और उसमें कुछ कुछ जगह पे ब्लैंक है, कुछ भी डेटा नहीं है, तो दैट ब्लैंक सेल्स आर कॉल्ड एज मिसिंग वैल्यू. सिंपल. ओके, नाउ इफ देर आर मिसिंग वैल्यूज इन द डेटा, तो मिसिंग डेटा विथ मिसिंग वैल्यूज कैन नॉट बी गिवन टू डेटा माइनिंग एल्गोरिदम. ओके, अगर डेटा माइनिंग एल्गोरिदम को आप मिसिंग वैल्यूज का डेटा दोगे तो वो उस पर अप्लाई नहीं होता है, इट विल गिव यू एरर. So before giving data to any data mining algorithm, you have to handle those missing values. Okay, now how to handle those missing values? The first method to handle missing value is ignore the tuple. Ignore the tuple means जिस भी रो में आपके मिसिंग वैल्यू है उसको निकाल दो. Got it? यस मैम. Discarding tuple with missing value, which is more effective if multiple attributes are missing, but not ideal if missing values vary greatly across attributes.
मतलब लेट्स से, ओके मैं आपको एक डेटा दिखाती हूँ। सी दिस इज अवर सैंपल डेटा। ये क्या है? कस्टमर का डेटा है। इसमें कस्टमर आईडी है, नेम, एज, इनकम एंड कॉन्टैक्ट मेथड। ओके, नाउ कैन यू सी मिसिंग वैल्यूज इन दिस? Yes, ma'am. Yes, you can see this. Here there is a blank, here is blank, here blank. Okay. Now the first method to handle missing value is what? Ignore the tuple. Ignore the tuple means you can remove this entire row from the data set because this row contains a missing value. The first method says that remove the entire tuple. तो आपको इसमें से कितने टपल रिमूव करने पड़ेंगे? 4, 4, ma'am. right? Yes, ma'am. So this is very small data set, but in real world we have a huge data set. फिर भी अगर आप इसको सी 7 को अगर आप 70 कंसिडर करते हो, ठीक है, तो आपके डेटा से लेट्स से 4 मतलब 40 का डेटा माइनस हो जाएगा, तो आपके पास कितना रहेगा? सिर्फ 30. ओके, एंड डेटा इज वेरी मच वैल्यूएबल, सो जस्ट फॉर सम मिसिंग वैल्यूज you cannot bear loss of the data. ओके, मतलब आपके पास लेट से 10,000 रिकॉर्ड्स है और उसमें आपके सिर्फ 10 रोज है विथ मिसिंग वैल्यूज। सो ये अगर प्रोपोर्शन आप देखोगे तो 10 इज नथिंग फॉर 10,000, राइट? सो यू कैन रिमूव। लेकिन आपके पास अगर 10,000 का डेटा है और इसमें 500 मिसिंग वैल्यूज है, तो इट इज नॉट अफोर्डेबल टू डिलीट 500 टपल्स फॉर द मिसिंग वैल्यूज। गॉट इट? Why I am telling this? Because अगर आप देखोगे तो मिसिंग वैल्यूज के हमारे पास मिसिंग वैल्यू हैंडल करने के लिए हमारे पास बहुत सारे टेक्निक्स है, ठीक है? तो कौन सा कब यूज करना चाहिए वो भी समझ में आना चाहिए। गेटिंग इट? तो सबसे पहला हमने क्या देखा? इग्नोर द टपल और रिमूव द टपल। तो ये टपल रिमूविंग का टेक्निक कब यूज में आ सकता है? जब मिसिंग वैल्यूज बहुत कम हो और टपल डिलीट करने के बाद भी आपका ज्यादा डेटा लॉस नहीं हो रहा है, देन ओनली यू कैन अप्लाई दैट टेक्निक। अंडरस्टूड? Yes, ma'am. हाँ, तो अगर आप रिमूव कर दोगे तो आपके डेटा में मिसिंग वैल्यूज नहीं रहेंगे, तो उसके आगे का जो स्टेप है वो अप्लाई कर सकते हो, ठीक है? तो दिस इज फर्स्ट मेथड टू हैंडल मिसिंग वैल्यू। यू कैन इग्नोर द टपल और यू कैन रिमूव द टपल, ठीक है? लेकिन सिर्फ एक याद रखना है कि रिमूव कब करना है? जब आपका डेटा लॉस नहीं हो रहा है। ओके, देर इज वेरी लाइक पॉइंट नॉट 1% डेटा का लॉस है, देन दैट मच लॉस वी कैन बेयर। लेकिन 10% 20% डेटा आपका लॉस हो रहा है तो वी कैन नॉट अफोर्ड दैट because data is so much valuable. We have some more techniques to handle missing data. So instead of removing the tuple, we can use some other technique. Okay, so we have done with this first. Now second, fill in the missing values manually. Okay, another is you can, instead of deleting, what you can do, you can fill some values manually. How you can fill some values manually? Let's say in office there are 100 people, okay, and out of that 100 people 10 people have not mentioned their preferred contact method. Okay, so HR can call those 10 people and ask them what are your preferred contact methods and manually fill this data. Let's say he called this fourth number customer and asked, and he said my preferred contact method is phone, and he said email. Okay, so what that HR is doing, he is manually filling the data. Okay, now again can you tell what can be the advantages and disadvantages of this? How it should be used, when it should be used?
मैम लार्ज अमाउंट आता है तो फिर हम मैनुअली नहीं वो करेंगे। वेरी गुड। अगर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है मिसिंग तो उसको हम मैन्युअली फिल नहीं कर सकते, राइट। इट वुड नॉट बी फिजिबल टू फिल दैट डेटा मैन्युअली अगर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा मिसिंग है तो, राइट। तो पहले जो दोनों मेथड्स हैं उसमें क्या है कि अगर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा मिसिंग है तो आप फर्स्ट टू मेथड्स यूज नहीं कर सकते, राइट, because first method says remove the tuple, second says fill it manually. Both are not applicable if large amount of data is missing, but if small amount of data is missing then obviously you can use any of them. ठीक है। now third technique, use a global constant. Okay, so what is this global constant? You can decide any constant value for that missing value and fill every missing value with that constant, like unknown or -1. Just wait for a second. I'll have a sip of water. ओके, ये थर्ड क्या है? यूज अ ग्लोबल कांस्टेंट, मतलब जहाँ पे भी आपके डेटा में मिसिंग वैल्यू है वहां पे कुछ तो कांस्टेंट वैल्यू से वो रिप्लेस कर दो। जैसे अननोन है या कोई न्यूमेरिक कॉलम है तो उसको -1 से फिल कर दो। ओके, दिस इज वन मेथड। नाउ व्हाट कैन बी द डिसएडवांटेज ऑफ दिस मेथड? क्या हो सकता है इससे? मैम जो डाटा है फिर उसका कोई मतलब नहीं रहेगा अगर लार्ज अमाउंट डाटा में भी अगर हम अननोन या ऐसा कांस्टेंट रखते हैं जैसे मतलब हम कुछ भी कांस्टेंट रैंडमली कुछ भी कांस्टेंट वैल्यू लेके अगर फिल करते हैं तो उस डेटा का कुछ मीनिंग नहीं रहेगा। और वी डोंट नो, अगर हमने वो एज इट इज डेटा माइनिंग के एल्गोरिदम को दिया तो मे बी डेटा माइनिंग एल्गोरिदम उस कांस्टेंट को सम मीनिंगफुल डेटा कंसिडर करके उससे भी कुछ नॉलेज एक्सट्रैक्ट कर ले, जो कि क्या होगा, रॉन्ग होगा। आ रहा है समझ में कि डेटा यस मैम। माइनिंग के प्रोसेस में जो भी आप डेटा देते हो वो सब वो एल्गोरिदम कंसीडर करता है। तो अगर आपके डेटा में आपने बहुत सारे मिसिंग वैल्यूज कुछ कांस्टेंट से रिप्लेस कर दिए तो डेटा माइनिंग एल्गोरिदम को पता नहीं है कि ये रिप्लेसमेंट है, ये सिर्फ आपको पता है। और आपने ये क्यों किया है? क्योंकि विथ मिसिंग वैल्यूज यू कैन नॉट वर्क ऑन डेटा माइनिंग। तो सिर्फ आपने क्या किया है कि मिसिंग वैल्यूज फिल करने के लिए कुछ तो डेटा वहां पे भर दिया, राइट। तो वो जो अननोन डेटा आपने भरा है या वो जो ग्लोबल कांस्टेंट आपने वहां पे फिल किया है उसको भी अगर डेटा माइनिंग एल्गोरिदम ने कुछ मीनिंगफुल कंसिडर करके कुछ नॉलेज एक्सट्रैक्ट कर लिया तो दैट विल बी रॉन्ग। सो हियर it will mislead the mining program, okay, because that information is not correct, that information is wrong, and it will mislead your mining program to identify unknown as an interesting pattern, okay. But if there are small amount of missing values you can fill it, okay. negligible amount में है आपके missing values then you can use this method as well, ठीक है। now these next three methods are quite sensible, okay. So most of the time for filling or for replacing missing values these techniques are used, okay. So fourth method here is use a measure of central tendency, okay. So now to understand this, first of all you should know what are measures of central tendency. What are measures of central tendency? मीन मोड मीडियन Yes, very good. रेंज।
mean, mode, median and range. These are the measures of central tendency. तो ये जो फोर्थ टेक्निक है इसमें क्या करते हैं हम, जो भी मिसिंग वैल्यूज है डेटा में, वी आर गोइंग टू फील दोज मिसिंग वैल्यूज यूजिंग मीन और मीडियन. ओके, सो फॉर एग्जांपल कस्टमर इनकम मिसिंग है किसी कस्टमर के टेबल में, कस्टमर के डेटा में, तो हम क्या करेंगे, जो बाकी के कस्टमर का इनकम है उनका एवरेज निकालेंगे, उनका मीन निकालेंगे, और जो मीन आएगा वी विल रिप्लेस all missing customer income with that mean value. Okay, we will use that value to fill missing incomes. Okay, I think यहाँ पे है. ठीक है, तो in customer column we have two missing values. So what we will do here, क्या करेंगे यहाँ पे, मीन कैलकुलेट करेंगे. राइट, किसका मीन कैलकुलेट करेंगे, इनकम एट्रीब्यूट से उसका। राइट, क्या आएगा इनकम, इसका मीन 55,000 plus 72 plus 68 plus 48 plus 75 divided by 5. I think ये मीन आता है 56. That is why 56 is given. Okay, so इनका मीन आता है 56. So हम क्या करेंगे, ये जो मिसिंग वैल्यूज है यहाँ पे इनको फिल करेंगे 56. Okay, got it? How to use यस मैम। measure of central tendency, मीन या मीडियन से हम वो जो मिसिंग वैल्यू है उसको रिप्लेस करते हैं. So fourth technique. Then next, use the mean or median of the same class. Okay, so replace the missing values with the mean or median of customers within the same class. Okay, यहाँ पे हमने फोर्थ में हमने क्या किया हमको था, नियम कानून फिर कौन रखेंगे आप फ्री रहिएगा जो जो करिए प्लीज नहीं म्यूट चलेगा साहब योरसेल्फ. क्यों कौन रहेगा तनख्वाह देते हैं क्या वेतन दे रहे हैं क्या प्रवीण करना कुमार, पड़ेगा प्लीज म्यूट बताइए योरसेल्फ. नौकर थोड़ी है हम ये कह रहे हैं कि हम ये नहीं कह रहे हैं हम सपोर्ट तक पुलिस बात नहीं है लेकिन मैम आप म्यूट कर दीजिए। अगर हम नहीं बोलेंगे आपके पास आप कैसे समझिए क्या हो रहा है नहीं हो रहा तो जो हमको सुनाया जाएगा सुनाई पड़ेगा वही कहेगा वही सही है इससे पहले दिखा दिए हैं बिना शांत बात बाबा बोले हैं देने के लिए जस्ट वेट. ओके, सो ये फोर्थ क्लियर हो गया. नाउ फिफ्थ इज यूज द मीन और मीडियन ऑफ द सेम क्लास. Okay, so I'll just explain you what is difference between fourth and fifth technique. Okay, so fourth में हमने क्या किया, ये जो पूरा इनकम का कॉलम है इसमें जितने भी वैल्यूज है उनका एवरेज निकालें. ओके, एंड वी हैव रिप्लेस्ड ऑल मिसिंग वैल्यूज विथ दैट पर्टिकुलर वैल्यू. ओके, नाउ लेट्स कंसिडर वी हैव वन मोर कॉलम. ये जो कस्टमर्स है, we'll consider these are the bank customers. Okay, and I'll add one more column here, that is credit risk, or let's say ये थोड़ा heavy हो जाएगा. Okay, हम यहाँ पे क्या करते हैं कि let's consider there is one more column, that is loan approved. Okay, तो ये डेटा है जिसमें दिया है कुछ कस्टमर का इंफॉर्मेशन, एंड
इनको बैंक ने लोन अप्रूव किया है या नहीं किया है वो इन्फॉर्मेशन दिया है, ठीक है। सो लेट्स से फॉर दिस फर्स्ट कस्टमर लोन इज नॉट अप्रूव्ड, फॉर सेकंड कस्टमर लोन इज अप्रूव्ड, for third customer loan is approved, like that we have some data. Okay, now what is this fifth technique? Use the mean or median of the same class. So अगर आपको ये जो मिसिंग वैल्यू है वो कैलकुलेट करना है, सी आपको ये मिसिंग वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो ये जो कस्टमर है ये कौन से क्लास से बिलोंग करता है? फर्स्ट, दिस इज द क्लास लोन अप्रूव्ड और नॉट अप्रूव्ड, ये क्या है? क्लास है इनका। ओके, तो ये बिलोंग करता है फर्स्ट क्लास से, राइट, मतलब वो ऐसे लोगों में से है जिनको लोन अप्रूव हुआ है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे कैसे करेंगे कैलकुलेट कि जो भी ये क्लास के कस्टमर से यहाँ पे सिर्फ उनके ही इनकम का एवरेज निकालेंगे। आया समझ में? यस, नो मैम। ओके। फोर्थ टेक्निक में हमने क्या किया था, जब भी हमें ये मिसिंग वैल्यू कैलकुलेट करनी थी तो हमने क्या किया, इनकम में जितने भी वैल्यूज है उन सब का एवरेज निकाला, ठीक है। ये फोर्थ टेक्निक आपको क्लियर हो गई? यस मैम। हाँ, नाउ फिफ्थ में हम क्या करेंगे, अगर आपको ये इनकम की जो मिसिंग वैल्यू है ये कैलकुलेट करनी है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सी ये वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, इसका आप क्लास देखोगे, ठीक है। ये क्या है? लोन अप्रूवल है क्लास, ठीक है। तो दिस सेकंड कस्टमर बिलोंग टू द क्लास टू विच लोन इज अप्रूव। ऐसे कितने कस्टमर है आपके डेटा में जिनको लोन अप्रूव हुआ है? हाउ मेनी कस्टमर्स आर देयर? 4 मैम। 4, राइट। तो इनमें से जितने भी वैल्यूज प्रेजेंट है उनका आप एवरेज निकालोगे, ठीक है। तो इसका इनकम है हमारे पास कितना है? 72, ठीक है। Then another customer from this class is this, but income is not there, so we will not consider that. Now next is this, इसका इनकम है 75,000, तो इनका हम एवरेज निकालेंगे, ये कितना आता है? 7 and 1/4 divided by 2, ये कुछ आता है 73.5, राइट। तो वो जो वैल्यू है वो हम यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। गॉट इट? यस मैम। वैसा ही इसका भी क्लास 1 है, इसलिए हम सेम वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं। अगर इसका क्लास 0 होता तो हम क्या करते? लेट्स से दिस क्लास इज 0 और आपको ये वैल्यू कंप्यूट करनी है, तो आप क्या करोगे? 0 क्लास के लोग देखोगे, ओके। सो 0 क्लास का ये है दिस वन एंड दिस वन, ओके। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? फर्स्ट इज 55, देन 68, देन 48, ओके। इनका आप एवरेज निकालोगे, जो भी एवरेज आएगा दैट यू विल रिप्लेस हियर। गॉट इट? ओके मैम। दिस इज द फिफ्थ मेथड, यूज मीन or median of same class, okay. And the fifth the last technique for handling missing value is most probable value, okay. So here we are using some advanced techniques like regression, Bayesian inference, decision tree induction. These are some advanced techniques. We are not going to into in detail of these techniques, but some advanced techniques can be used. So using this technique we can predict the missing value, okay. And by predicting these are the algorithms.
So these algorithms will predict those missing values, and then we can replace those missing values with whatever value these algorithms will give, and then after that we'll apply some data mining technique on it. Okay, तो ये जो सारे मेथड्स हमने देखे थे उनमें सबसे इफेक्टिव मेथड ये सिक्स्थ वन है, जहाँ पे हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं वैल्यू, लेकिन ये सबसे कॉम्प्लेक्स है, इसमें प्रोसेसिंग टाइम ज़्यादा जाता है। ठीक है, तो अगर आपका डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है और उसमें बहुत सारे मिसिंग वैल्यूज है, तो यू शुड यूज दिस सिक्स्थ टेक्निक। ओके, मॉडरेट अमाउंट में आपके पास मिसिंग वैल्यूज है तो यू कैन ऑब्वियसली यूज फोर्थ एंड फिफ्थ टेक्निक, और बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट में आपके पास मिसिंग, आपके डेटा में मिसिंग वैल्यूज है, तो यू कैन यूज एनी ऑफ दिस फर्स्ट थ्री टेक्निक्स। अंडरस्टूड? यस मैम। Okay, so for today we'll stop. We will continue in the next lecture. कल नहीं होगा लेक्चर, डे आफ्टर टुमारो। ओके मैम आप